हाइड्रोजन एटम क्या है? एक प्रोटॉन के इलेक्ट्रिक फील्ड में फंसा हुआ एक इलेक्ट्रॉन लगातार घूमे जा रहा है। अब उस इलेक्ट्रॉन का मास हम m मान लें, वेलोसिटी v है और r रेडियस के ऑर्बिट में घूमे जा रहा है। ये प्रोटॉन जो कि इलेक्ट्रॉन से लगभग 2000 गुना भारी है और इस पर चार्ज पॉजिटिव नेचर का है, लेकिन मैग्नीट्यूड उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो इस तस्वीर को आप यूं भी देख सकते हैं कि एक प्रोटॉन था, कहीं से कोई आवारा भटकता हुआ इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन की फील्ड में आया और घूमने लगा। ठीक वैसे ही जैसे यदि आप कोई पोल पकड़कर खड़े हैं और यहां से कोई भागता हुआ व्यक्ति उसको आप झपट के पकड़ ले तो व्यक्ति सीधा जाने के बजाय गोल घूम जाएगा। क्यों घूमेगा गोल? क्योंकि आप उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहे हैं, एक ऐसा फोर्स जो हमेशा आपकी तरफ डायरेक्टेड है और वही उस व्यक्ति के डायरेक्शन को लगातार बदल के सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक, इलेक्ट्रॉन को ये प्रोटॉन अपनी ओर खींच रहा है, तो ये कहीं भी जाए ये हमेशा प्रोटॉन की ओर ही खींच रहा है, इसलिए सर्कुलर मोशन में। सीधी भाषा में कहें, मैकेनिक्स की भाषा में कहें तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के लिए चाहिए वो कौन दे रहा है? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्स फोर्स K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको हम अपना पहला इक्वेशन मान लें। नील्स बोर ने एक लाइन से अलग हट के कल्पना की और वो कल्पना क्या थी कि हर एक रेडियस वाला ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट वही ऑर्बिट पॉसिबल है जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम h/2π का होल नंबर मल्टीपल है। कहने का मतलब n की वैल्यू यहां पर 1 2 3 ये सब हो सकता है। जब इसके बारे में पूछा गया कि क्यों कुछ खास एंगुलर मोमेंटम ही हो सकता है इलेक्ट्रॉन का, ऐसी कल्पना आप क्यों कर रहे हैं, तो इसका उत्तर था मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर है कि यदि हम ये मान लें तो हाइड्रोजन एटम से निकलने वाले रेडिएशंस का वेवलेंथ कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। चलिए कैसे पॉसिबल हुआ इसको देखते हैं। यह हमारा इक्वेशन नंबर 2 हुआ। इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं 12 mv² और पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाय R। अब यदि इक्वेशन नंबर 1 का ध्यान रखें तो वहां से हम को मिल सकता है mv² इक्वल टू K E² बाय R, क्योंकि R से R कैंसिल हो गया। नाउ इस mv² का हम यूज यहां करें तो ये फॉर्मूला बन जाता है 12 KE² बाय R माइनस KE² बाय R।
Now k e square by r is common, so that is half minus 1. So overall it is minus half k e square by r. Total energy of electron in a particular orbit is given by this expression. So this is our equation number 3. इसमें जो ये r आ रहा है, इसको एलिमिनेट करने के लिए हम इक्वेशन 2 में से v की वैल्यू उठाकर इक्वेशन 1a में डाल देते हैं. ये इक्वेशन अपना 1a है. 2 से v की वैल्यू उठाकर 1a में डाल देते हैं. सो 2 से v की वैल्यू क्या आएगी? v की वैल्यू आएगी nh बाय 2 पाई mr. ये v की वैल्यू है और ये हम डाल देते हैं इन इक्वेशन 1a. नाउ टू पुट इट इन इक्वेशन 1a, let me create a space where I can write v की जगह nh by 2 pi mr equal to k e square by r. Now here you can see r square डिनोमिनेटर में है, इस r से कट जाता है. उस r को हम इधर लेकर जाते हैं और k स्क्वायर को इधर लेकर आ जाते हैं. तो यहां न्यूमरेटर में बचता है n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर. m square gets cancelled with m, so only m is there. k e square comes from there. तो ये जो इक्वेशन है, जिसको मैं कह सकता हूं दिस इज इक्वेशन 4. आई एम गोइंग टू यूज इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3. सो दिस इक्वेशन here gives us the total energy. And the value is minus half k e square, and instead of r I am going to write n square h square 4 pi square m k e square. Now in this expression there is the negative term, then we have 4 getting cancelled with 2, so we are left only with 2 m k square pi square e raised to the power 4 upon h square. And n square in the denominator. Now the entire quantity in the bracket, they all consist of universal constants: mass of electron, Planck's constant, pi, charge on electron, and k, the constant used in Coulomb's law. So total energy, which now I am going to
write as En. Instead of writing TE, I am going to write it as energy in the nth orbit. So that comes out to be minus 2m k square pi square e raised to the power 4 upon h square, and 1 by n square is here. Now, if we substitute all this and calculate, its value comes out to be minus 13.6 E upon n square. So this you will get in joule if you are using all SI units. Obviously, if you want this to be in electron volt, you can write En equal to minus 13.6 upon n square, because this E is cancelled by E, so that you are getting the energy in electron volt. So let's remember energy of the electron in nth orbit as minus 13.6 upon n square, and essentially this is in electron volt. Now this can be written on an energy diagram, which we draw. Energy of the electron in n equal to 1, when you put it n equal to 1, it comes as minus 13.6. When you put n equal to 2, 2 to the 4, so that becomes minus 3.4 electron volt, of course. N equal to 3, you get minus 1.5. Similarly, when you go to n equal to infinity, this becomes 0. So clearly the result is that electron in hydrogen atom cannot have any possible energy. It will have only a discrete set of energies as long as it is in hydrogen atom. It means either the energy will be 13.6 electron volt or 3.4 electron volt, minus 3.4 electron volt. Nothing in between. Here we note that electron in hydrogen atom can have only discrete energy. Say in level 1, if it is minus 13.6 electron volt, straight away the next level it has minus 3.4 electron volt. Nothing in between. Now let's look how we can calculate Now let's calculate the wavelength of light emitted when an electron jumps from higher level to a lower level. Say for example, suppose an electron is in the excited state n equal to 3 and it jumps to n equal to 1. Then the difference of energy goes out in the form of
electromagnetic wave, and this electromagnetic wave has energy delta E. So delta E is the difference of energy. The electron has jumped from level 3 to level 1, so delta is E3 minus E1. Now E3 has minus 1.5 electron volt energy and E1 has minus 13.6 electron volt energy. So here it becomes 13.6 minus 1.5. Now let's see how much is the wavelength in this case. Energy is this much. Now energy is h c by lambda. So I can write h c by lambda equal to 12.1, and this is in electron volt. Firstly, I'll convert it into joule. So electron volt 12.1 when multiplied with E, the charge on electron, it becomes energy in joule. So here the wavelength will be hc by 12.1 E. Now h, that is 6.6 into 10 raised to the power minus 34, C 3 into 10 raised to the power 8, and the number is 12.1, and E is 1.6 into 10 raised to the power minus 90. Now here the numbers that are involved, I am going to write it in the rough. 6.6 into 3 upon 12.1 into 1.6. Now here you can make approximate calculations. So it is almost 4 times or maybe 4.1 time. So in the numerator you have 12.3 and here it is 12.1. So this is a number slightly larger than 1. So slightly larger than 1, or you can say 1. Now look at the powers of 10. It is 10 raised to the power minus 34 plus 8, and this minus 19 in the numerator gives you plus 19. So this overall becomes 10 raised to the power minus 7. So the wavelength is approximately 1 into 10 raised to the power minus 7 meter. To make it nanometer, we multiply it with 100 and divide it with 10 raised to the power 2. So that becomes 10 raised to the power minus 9. In other words, it is 100 nanometer. Now this electron jump from level number 3 to level number 2 produces an electromagnetic wave of approximately 100 nanometer, and this is what we observe in the lab. In a similar way, whichever radiations are emitted from hydrogen spectrum,
their wavelengths could be calculated by this method or the theory that was provided by Niels Bohr, of course, based on Rutherford's atomic model. So, Bohr's theory of hydrogen atom was a great point of confirmation for Rutherford's model of atom.